बिल्कुल। So basically, as far as for loop is concerned, or while loop is concerned, any loop, you will find them everywhere. Uh, let's play music on your phone and it's on repeat mode. It's a loop. You go to an ATM machine, you will use a loop over there. So loops will always be used wherever we have a range, a condition that has to be met. आज का discussion हमारा basically will be revolving around कि how does for loop works in Python. Okay, so it's obviously very important. How does it work? Okay, let's start. So I can say over here is, let's say, for x in range, we can give a range over here. Let's say 10. You have to put this, and then I'll simply say print x. If I now simply run this, I'll have values printed from 0 till 9. Okay. So ओके। let me explain how is it working. For, so obviously for is a keyword. X is any random variable that I have used, which means x in range. A range actually means 10 का मतलब ये होता है, it means from 0 till 10. So बिल्कुल x in बिल्कुल। range actually means is that it is going to iterate through x in 0, x in 1, x in 2, x in 3, and then it will work this way and to keep on printing. Okay. Once the ओके। range is there met, वो automatically इसको break कर देता है. ठीक है. ये this is the way ठीक है। for loop ये आपका काम करता है in Python. Yes, it was different in Java, but अब point वही है. We could even do this सही way. है। अच्छा Okay. सर, एक्स जो है वो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है? X could be any variable. X could be anything. X could अच्छा। be X could be for number in range, and I could write over here is number. So it's anything. You get the point. It's just ओके। a variable that is helping me to iterate for number in ठीक range. है So number in range 1 to, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मैं लिख सकता हूँ. सर, अगर 5 से लेके 10 तक करना हो? जी मैं वो करने लगा, मैं ताया लगाऊं. मैं अच्छा यहाँ अच्छा। लिखता हूँ 1, 10. So obviously it means is, now you can see over here is it starts from 1 and goes till 10. I told you 9। 10 is not because goes till 10. If you want to बिल्कुल। go till 10, in that case you have to write 11। 11. Then obviously go यस। from 1 till uh, 10। 10. ठीक है. और आप जो कह रहे हो, ऑलराइट। obviously if I want to start from 5, you can obviously start from 5. You can say 5 comma 10. It will start from 5 and it will go till there, ओके। right? So that's how you can specify जी। the range. And let's say if I want to go from 1 till 10 and I would like to increment with 2. That's the third thing that you can add. So you can see what here is, I'm saying 1, 3. So if I want to, in other words, if I want to print the odd numbers, this is how will I print the odd numbers. You get the point? सर, ये टू वाला मैं समझा नहीं, G, बट टू 1 is एलिमिनेट the हो गया इसमें starting, से। 1 is the starting, 11 is the ending, यस। and the third parameter that you have, this basically is the increment. इंक्रीमेंट The का increment मतलब होता है or the gap ऐड करना? or the gap. Okay, मतलब अच्छा। वन के बाद skip 2 skip करके 3 आ जाएगा. ठीक. और 1 plus 2, 2 plus 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 2 9. So basically this 2 actually is an increment. ओ अच्छा अच्छा You get अच्छा। my point? जी Okay. जी जी। So starting, ओके। ending, increment. Now if I want to मैं print, समझा। if I want to print from 0 till 10 all the even numbers, what do? इवन नंबर्स में अगर आपको करना है तो अ, फिर क्या करेंगे? We start from 0 because I want 0 to be there, जी। and that's it. और कितना गैप आएगा? देख लो टू खुद. का ही आएगा? 0 2, अच्छा, yes. जी 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 जी। Because बिल्कुल ये। once I'm starting from 1, so 1 में जब when I add 2 तो it becomes 3. वो फिर So ऑड when I, नंबर हो जाएगा। yes or no? बिल्कुल। You get my point. जी सर। ठीक है. So this is how you can work with ranges over here. इसमें आप ये भी कर सकते हो कि over here if I want this to be reverse, so it works in different way over here. So I can say over here is in reversed, and here we go. I just have to put another bracket. Obviously, while you practice, you'll get used to these things. Okay, you get this colon at the end, stuff like that. बिल्कुल। So you can see over here is I am actually going in reversed. Okay, obviously I'm not copy pasting. You can revise through the video, and you should make notes out of this so that you know everything.
Okay, so you honest. got the reverse thing as well. You can also iterate over strings as well. Now, what do I mean by that? I can say over here is, let's say, for letters, या मैं पहले मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ name is equals to, let's say, I can just time over here is Saem, and what I can do over here is for name, no, for, let's say, for X in name, print name. So you can see over here is what's happening is if I do this, I am getting what? Obviously, it's printing this sign how many times? Okay, it's just printing it. ठीक है? तो you भी आप कर सकते हैं. आप you can even do is अच्छा let me first of all sorry मैंने continued break तो discuss नहीं किया. String में बाद में आऊंगा. ओके Let's see, when I was doing this, not even reverse, while I was doing this, and let's say I want to go from, let's say, 10 till 20. Okay, so obviously I get the values from 10 to 20. What if I want to skip 13? What do I do? Over here, then what we can do is we can say over here is if number is double equal to 13. Do you remember what double equal to is? It's comparison. ठीक है ना? तो उसका फिर मैं क्या ओके करूंगा? मैं कहूंगा continue. मैं ऐसा एक्सप्लेन करता हूँ. और उसके बाद क्या क्या हमें करना पड़ेगा? We have to write over here is else. ठीक है. अब ये देखो अच्छी बात है about the latest version of PyCharm. मैंने else लिखा है तो automatically it has helped me to indent it. This was not happening in the previous version. So if I अच्छा do this, अच्छा print को क्या कह रहा है? जी, मैंने print actually अगर मैं एक काम करते हैं बल्कि मैं इसको remove करके देखता हूँ कि does it help me with that? So yes it does. Do you see this? उसने print को proper जगह पे लिखा है, indent किया मतलब. अच्छा ये जगह भी मैटर करती है जी, पाइथन में देखो, while you were doing Java with me, आपने नोट किया होगा we used brackets over there for everything. For के जी अंदर bracket यूज किया था, if के अंदर bracket यूज किया था, function के लिए bracket यूज किया था. Python doesn't या use brackets. Python works in the concept of indentation. So indentation की वजह से पता चलता है कि so देखा मैंने अगर if यूज किया है तो this continue means actually this is a part of if. This print actually means a part of else. मतलब मगर मैंने बता दिया ना, ओके इंडेंटेशन की हैंडीकैप लेने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है बिकॉज दिस पाइचार्म न्यू वर्जन इज डूइंग इट फॉर मी. पहले नहीं काम, ऑल राइट पहले यूं था, मैंने पहले टाइप किया था. इफ आई रन दिस इट सेज ये दैट नहीं होगा अनएक्सपेक्टेड इंडेंट. इट सेज अच्छा ये तो सर काफी क्रेजी है इसका इसका पर्पस क्या है बेसिकली देखो ना, देखो एवरी लैंग्वेज इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स. ठीक है ना? यस ऑफ कोर्स अब समझते हैं ना, जावा में ब्रैकेट्स की अगर कोड ब्लॉक को डिफाइन करना है ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करते हैं. Python, the reason why it became more and more common and famous was it has very less code. You do the same thing in VB.NET, you'll have triple code than Python. So Python ने अच्छा ये brackets वगैरह बाकी चीजें code को simplify करने की कोशिश की as much as they can. This is why it is user friendly. You get my ओके point? ठीक है ना? जी तो जी ब्रैकेट्स लगाना अच्छा बंद करना तो बेहतर से डायरेक्टली यूं कर लो. व्हाई ब्रैकेट्स? लेट्स बट देखो कोड ब्लॉक को मुझे बताना तो पड़ेगा ना कोड ब्लॉक है. हाउ डू आई डू इट देन? दे थॉट ऑफ के व्हाई नॉट वी इंडेंट द स्टेटमेंट इन द कोड ब्लॉक एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कोड ब्लॉक. अगर वो इंडेंट हुई है, अगर एंड नहीं हुई तो कोड ब्लॉक नहीं है. वेरी गुड. सो डोंट यूज द ब्रैकेट्स. बिल्कुल गेट माय जी पॉइंट? जी ठीक है, यस तो देखा मैं ये जब मैंने पहले किया था ये नहीं था, इसको मैं इंडेंट कर दूंगा तो ऑब्वियसली it will work. So actually what's happening? मैं करना क्या चाह रहा था? Do you see over here is I don't have 13 appearing. It's 11, 12 and 13 is gone. Let me explain what यस I'm doing over here. I'm saying for number in range 10 to 20. Line number 1 I think so is very clear to you. जी बिल्कुल If I come to line number 2, I'm saying is if the variable is double equal to means comparison. I'm trying to compare whatever is on the right hand side with the number. So whatever is on the right hand side is 13.
So double equal to is comparison. Single equal to is assignment. If I say number is equal to 13, this means I'm assigning 13 to number. मगर डबल इक्वल टू असाइनमेंट नहीं होता, वो कहता है कंपेयर करो. जब नंबर 13 होगा तो कंटिन्यू करो. ओके, नंबर तो कंटिन्यू को अच्छा. मतलब कंटिन्यू मींस इट विल स्किप दैट. ओके, एल्स इट विल प्रिंट रेस्ट ऑफ दैम. यस और ओके. नो. ओके, जी. अच्छा. कंटिन्यू अच्छा इज सर, समहाउ अगर टू आप स्किप. कोलन के बाद 13 लिखते. नहीं बेटा, वो देखो. अच्छा, अब ये भी, ये अब देखो, इफ के बाद फॉर के बाद ये कोलन डालने जरूरी है. ये भी लैंग्वेज को देखो ना, ये रूल्स है. यू हैव टू पुट द कोलन्स. ये अपनी अपनी मर्जी से आप नहीं कर सकते. There's अच्छा, something you सही will है. remember. You have to put the colon. You have to put the colon. Okay. Range में you have to Okay. put the bracket. Obviously, this is something. The more you practice, the more it will be. You'll become used to it. जी. Okay. I cannot give you a reasoning for this कि colon क्यों है. Rule है तो rule है. Get my point. बिल्कुल. बिल्कुल Right? बिल्कुल. अच्छा, तो कंटिन्यू की समझ आ गई आपको. कंटिन्यू का मतलब है कि we'll continue and it will skip it. Something important. So, if I want to, let's say I don't want to continue. I would just want to break it. I want to like break over there. अगर 13 आता है तो रुक जाए. So you can see what's happening is as soon as it encounters 13, it will break and it will just print out that. जी. उसके अगला वाला अच्छा. वो print नहीं करेगा. You get my point? जी जी जी, बिल्कुल. ठीक है. तो ये ब्रेक हो गया और आपका ये हो गया कंटिन्यू. दोनों इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब हम दोबारा हाँ. चलते हैं. नाउ आई डिस्कस विद यू इज, लेट्स लेट्स से लास्ट टाइम की एग्जांपल यूज करते हैं. आई हैव laptops is equals to, since I'm using a list, I can just type over here is Dell. I can type over here is Toshiba. Oh, sorry. Toshiba. I can type is Acer. I can type is Apple. Right? So जी. let's see how what can we work with this. So let's say I can say over here is for X in laptops, print X. Right. So what's happening is indentation. Where? Sorry. Yeah. So it's simply doing is it's obviously printing all my elements within my array और उनको प्रिंट कर रहा है. तो फॉर से हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास कोई अरे है, कोई लिस्ट है, एंड इफ आई वांट टू डिस्प्ले, इफ आई वांट टू फेच, if I want to go through each and every element in my array, I can use the for loop to do so. Yes or no? बिल्कुल. You get my point? अच्छा. तो जी. ऑब्वियसली इसमें ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये भी कह सकता हूँ कि if I say over here is if laptops is double equal to, let's say, Acer, then you do is break. ठीक है. अच्छा, तो शीबा पे रुक जाएगा. जी. और else print expected कहाँ था ना, sorry, is G. हम्म. So you can see over here is what is happening is laptops Acer, uh, yes name, one second. स्पेलिंग तो सही है. if laptops ही है, laptops ही है. For X in laptops, if laptops is double equal to this, तो फिर मैंने किया break, right, and it should print X. Okay, right. Let's say, let me simply print laptops. अच्छा. फिर तो array आ जाएगी. नहीं,
दिस इज वियर्ड वैसे, होल्ड ऑन, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। जी जी। बेटा भी मैंने गलती कर दी होगी। काफी बेसिक सा है इसमें तो। इसकी स्पेलिंग भी वही है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई क्रिटिकल नहीं, कहाँ वो है? कोई और रीजन होगा। कंटिन्यू, ब्रेक कर देते हैं और लेट मी जस्ट set a comment. अच्छा, मैं इसको एक और एग्जांपल से देख लेता हूँ थोड़ा। लेट्स से आई हैव ठीक द है। कॉल। मैं यहाँ कहता हूँ फॉर इंडेक्स इन रेंज लेंथ लैपटॉप्स, and I can say is, let's say, best laptop is इंडेक्स कर देते हैं। अच्छा, इस केस में काम कर रहा है। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। इसको, ये इसी एग्जांपल को देख लो। ओके, जी आई लुक एट दैट अगेन एज वेल। व्हाट एम आई डूइंग ओवर हियर? ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा आपको। पहले मैंने लाइन नंबर 1 में क्या किया, आई जस्ट सिंपली डिफाइंड ओवर हियर इज सिंपली एन अरे जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं। लाइन नंबर 2 में क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ फॉर इंडेक्स। अब यू डू नो इंडेक्स का मतलब क्या होता है। इंडेक्स का मतलब होता है डेल इज 0 इंडेक्स, तो शिपा इज 1 इंडेक्स, सो ऑन एंड सो। बिल्कुल। I'm saying is for index in range length of laptops. It means obviously the length of this is 4, so it will know it's going to 4. Get the point? इसलिए वो 4 times जी run कर। तो मैंने मैंने बिल्कुल। मैंने सिर्फ अरे की लेंथ को कैलकुलेट किया है और मैंने क्या, इंडेक्स इन रेंज दिस। फिर मैंने क्या, प्रिंट बेस्ट लैपटॉप इज स्ट्रिंग यूज किए, कॉमा लैपटॉप्स इंडेक्स। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इंडेक्स ओवर हियर? ये हो क्या रहा है, मैंने आपको पहले बताया था। व्हेन आई सेड फॉर एक्स इन रेंज 20 का था, तो इट एक्चुअली मेंट वाज कि एक्स विल फर्स्ट बी 0, देन 1, देन 2, देन 3। यू गेट माय पॉइंट? सो जी इंडेक्स का वर्ड जी मैंने जी। सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए किया। या यहाँ आई कुड हैव even done over here was for x, and I could have written over here was simply x as well. So you see, it gives me the same answer. मगर obviously मैंने index को इसलिए use किया था just to explain you कि मैं index को refer कर रहा हूँ. So x in range, this means print laptops x. So one by one उसको वो print कर रहा है. You get my point? ओके। It जी goes जी। from this till the full length of the array, and then I'm just printing it. This you obviously know. Okay, whenever I have a string, I have to put in double quotes. Comma is used to separate the string from a variable name. Okay, and constant name. So laptop is the name of an array. इसको मैं double quotes में ही डालूंगा और मैं laptops के आगे ये square brackets. Why did I put these? The reason why I put the square brackets is because I want to refer to each and every element of my array. It's 0, it's 1, it's 2, it's 3.
और उसको हम रिफर कर अच्छा। सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर आप सिर्फ सिंपल ब्रैकेट यहाँ पे डालते हैं एक्स के बराबर में। नहीं नहीं बेटा, वो काम नहीं करेगा। देखो मैंने पहले बताया था अच्छा। कि whenever we have to talk about databases, arrays, तो it has to work with these brackets. Yes or no? बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, तो ये ठीक स्क्वायर है। ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि आई एम रिफरिंग टू द एलिमेंट नंबर ऑफ द अरे। ओके, अब आपको पता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू, मैं इसको हटाता हूँ, इफ आई वांट टू से ओवर हियर इज प्रिंट, इफ आई वांट टू प्रिंट लैपटॉप्स का फर्स्ट एलिमेंट में क्या है, तो इज दिस नॉट द वे वी यूज, एंड आई गेट तोशिबा? जी यस आई डू। बिल्कुल। हाँ, because this actually means that Toshiba is at the index number of one, उसका एलिमेंट नंबर क्या है? Get the point? अच्छा। ठीक है। ठीक So है। जी जी। this is the way you have to actually refer to them, right? सही है। अच्छा, इसके साथ ऑब्वियसली यह कि एग्जांपल्स आपकी हो गई, मुझे काफी ज्यादा फॉर लूप की। वाइल लूप भी होता है इधर। वाइल लूप को मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। फॉर एग्जांपल आई कैन से ओवर हियर इज, लेट्स से number is equals to 2, and I can say over here is while the number is less than 8, yet whatever, ठीक है, you will simply print is, let's say, thanks, and oops, sorry, number is equals to number plus 1. So what's happening is I have is thanks, sorry, thanks being Nice. printed 5 times, in fact 6 times. Why is it being printed? क्योंकि यहाँ मैं कह रहा हूँ नंबर इज इक्वल टू, ओके, वो चेक करेगा while the number is less than 2। वही बात हो गई मैम, हमने while पहले भी डिस्कस किया था कि वो पहले 2 से स्टार्ट होगा, फिर वो चेक करेगा 2, फिर वो 3 हुआ, फिर 4 हुआ, सो 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसे प्रिंट किया जब वन व्हेन नंबर बिकेम 9, व्हाट हैपेंड वाज इट विल सिंपली गेट वो आउट। स्टॉप हो गया। या आपने अच्छा। नोट किया होगा, आपने जावा मेरे साथ किया हुआ है, जावा में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट नहीं कहूंगा, मुझे फ्रैंकली जावा ज्यादा आसान लगती है। तो अच्छा। जावा में ब्रैकेट्स थे, यस, क्योंकि मेरे ख्याल से जावा समटाइम मेक्स मोर सेंस, बट एनीवे इधर क्या हो रहा है, इसकी कोड कम है। ठीक है, तो अच्छा। सिंपली व्हाट्स हैपनिंग इज नंबर हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है, ओके, एवरी टाइम इट्स बीइंग इंक्रीमेंटेड और प्रिंट हो रहा है। व्हाट विल हैपन इफ आई डू 2 ओवर हियर? अ, तो दो और ऐड हो। तो नहीं, थैंक्स विल बी प्रिंटेड मोर और लेस? लेस। वाई? कमाल, देखो देखो, मैंने टू से मैंने क्या, नंबर इज टू, वाइल आई पॉइंट नंबर 3 पे इसने कहा वाइल 2 इज लेस देन 8, इज द कंडीशन ट्रू? 2 इज लेस देन 8 ना? 2 इज लेस देन 8, कॉमन, बेटा यू देयर, कैन यू हियर मी? जी बेटा, यू देयर?
बेटा मैं उसको explain कर देता हूँ and I'll share the video with you. So what's happening over here is, beta देखो सुनो, while the number is less than 8, okay, 2 is less than 8, it will print thanks. Okay, then what will happen is, we'll have is 2 plus 2, 4. Then it'll say 4 is less than 8, and then it will print. Then what we'll have is 4 plus 2 is 6, 6 is less than 8, it will print. And ultimately, when it becomes 8, 8 is not less than 8, and then it will stop.